हेलो फ्रेंड्स, कल हमारे 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गए थे। आज ब्लैक बुक सीरीज में हम 300 से 400 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे। 301 अ रूम इन पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लॉथ्स और लगेज मे बी लेफ्ट। क्लॉक रूम में यानी समान कक्ष। द साउंड मेड बाय अ हैंड क्लॉक यानी मुर्गी की आवाज। हैंड बिसाइड अ सी कॉस्ट यानी समुद्र सतह। स्पाइडर्स होम कॉबवेब यानी मकड़ी का जाला। अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट। कॉकपिट यानी वायुयान में चालक कक्ष। द ड्रिंक यूजुअली मेड फॉर अ मिक्सचर फॉर एन और a drink usually made from a mixture of one or more alcoholic drink. Cocktail यानी मिश्रित शराब। An instruction that is added later to a will usually to change a part of it. कॉडिसिल यानी वसीयतनामे के बाद का परिवर्तन पत्र। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू टेक यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग। कॉर्शन यानी जोर जबरदस्ती करना। अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स। कॉफर यानी तिजोरी। अ कलेक्शन ऑफ स्लैब्स। कॉफल यानी गुलामों का काफिला। A remarkable concurrence of event or circumstances without apparent causal connection. Coincidence यानी सहयोग। A person that one work with at the same place in a profession or a business. Colleague यानी सहकर्मी। A mutual discourse. Colloquy यानी वार्तालाप। A gigantic statue. Colossus यानी विशाल मूर्ति। To keep a great person or event in pupils memory. कमेमोरेट यानी स्मरण करना। गिव मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स। कमीशन यानी दलाली। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विथ डिजायर टू हेल्प। कॉम्पेशन यानी दया या अनुकंपा। पीपल हु बिलोंग टू अ सेम कंट्री। कंपैट्रियोट्स यानी स्वदेशवासी। A person who introduces the the performers or contestant in a variety show. कंपेयर यानी कार्य उद्योषक। satisfied with no desire to change or improve. कंप्लेसेंट यानी आत्मसंतुष्टि। to make perfect or complete. complement यानी पूरक। a remark that express approve or admiration. कॉम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा करना। वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स न्यूज़पेपर्स etc. कंपोजिटर यानी अक्षर योजक। हैविंग टू मच प्राइड इन योरसेल्फ एंड व्हाट यू डू। कॉन्सिएटेंट यानी अभिमानी। कैपेबल ऑफ बीइंग इमेज्ड और ग्रेस्पेड मेंटली। कॉन्सिएबल यानी कल्पनीय। हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल्स और स्फीयर्स। कॉन्सेंट्रिक यानी सकेंद्रीय। लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमन विदाउट बीइंग अनमैरिड टू ईच अदर। कॉन्कुबनेज यानी बिना विवाह के साथ रहना। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट is towned separately by the pupil living in it but also containing shared areas. condominium यानी फ्लैट की तरह का घर। forgive pardon some wrongdoing or an offense. condone यानी माफ करना। a company or person that make or sell sweets or chocolate. confectioner यानी मिठाई बेचने वाला। to town up to something as true. confess यानी कबूल करना। an arrangement of parts or elements in a particular from a figure. कॉन्फ़िगरेशन यानी एक विशेष आकृति में तत्वों की व्यवस्था।
टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी. कॉन्फिस्केट. कॉन्फिस्केट यानी जब्त करना. कॉन्स्टिट्यूबल. कॉम्बुस्टिएबल. फ्लेमेबल यानी कॉन्फ्लैग्रेंट. कॉन्फ्लैग्रेंट यानी जलता हुआ. प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट. कॉन्फ्लुएंस. कॉन्फ्लुएंस यानी संगम. pertaining to an individual from birth. Congenital. Congenital यानी जन्मजात. A corporation made up of a number of different companies that operate in diversified fields. Conglomerate. Conglomerate यानी कंपनियों का समूह. An assembly of worshippers or a group of people who have come together in religious building for worship and prayers. Congregation. Congregation यानी धार्मिक सभा. An opinion or conclusion formed on the basis of incomplete information. Conjecture. Conjecture यानी निराधार कल्पना. A man who knows a lot about things like food, music and art. Concisor. Concisor यानी विशेषज्ञ या पारखी. Feeling inside you which tell you what is right and what is wrong. Conscience. Conscience यानी ज़मीर या अंतरात्मा. One who does one's work thoroughly and seriously. Conscientious. Conscientious यानी कर्तव्यनिष्ठ. A careful preservation and protection of wildlife is the need of the hour. Conservation. Conservation यानी प्राकृतिक संरक्षण. Opposed to great or sudden change. Conservative. Conservative यानी रूढ़िवादी, अपरिवर्तनवादी. Comfort someone at the time of grief or disappointment. Console. Console यानी सांत्वना देना. A group of stars that forms a shape in the sky and has a name. Constellation. Constellation यानी नक्षत्र. State of anxiety or dismay causing mental confusion. Consternation. Consternation यानी घबराहट. Impose a restriction on. Constraint. Constraint यानी विवश किया हुआ. Extremely skilled. Consummate. Consummate यानी उत्कृष्ट. Easily spread from one person to other. Disease. A disease which spreads with contact. Contagious. Contagious यानी संक्रामक. Something made impure by imposer to putting substance. Something made impure by imposure to putting substance. Contaminate. Contaminate यानी दूषित. Belonging to the same time, a person living in the same age with another. Contemporary. Contemporary यानी समकालीन. Someone who is satisfied with life is general. Contented. Contented यानी संतुष्ट. Touching along the side or boundary. Contiguous. Contiguous यानी निकटवर्ती. An event that may or may not happen. Contingency. Contingency यानी आकस्मिकता. Prohibited by law or treaty from being imported or exported. Contraband. Contraband यानी वर्जित सामग्री. A man who is recovering from illness. Convalescent. Convalescent यानी बीमारी से ठीक होना. A place where nuns live and work. A place where nuns lives and works. Convent. Convent यानी मठ. A group of vehicles traveling together, typically one accompanied by armed troops. Convey. Convey यानी काफिला. Ceremony of crowning a king. Coronation. Coronation यानी राजतिलक करना. To conform with the help of evidence. Corroborate. Corroborate यानी पुष्टि करना. A funeral procession. Cortege. Cortege यानी शव यात्रा. Science of the constitution of the whole universe. Cosmography. Cosmography यानी विश्व रचना. A person who regards the whole world as his country, or one who is a citizen not of
अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड. कॉस्मोपॉलिटन यानी समस्त संसार का. मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ fraudulently as genuine. Counterfeit यानी जाली. Stanza having two lines in verse. Couplet यानी द्विपही दोहा. A person who takes care of cattle. A person who takes care of cattle. Cowhead यानी ग्वाला. That can be believed or trusted. Credible यानी विश्वसनीय. A person who readily believes others easily. Credulous यानी भोला भाला. A system of religious belief of faith. Creed यानी संप्रदाय. A place where a dead person's body is burned. Crematorium. Crematorium. A place where a dead person's body is burned. Crematorium यानी शवदाह ग्रह. Turning point of danger or disease. Crisis यानी संकट. Crisis यानी संकट. A principle or standard by which anything is or can be judged. Criterion यानी मापदंड. One who finds nothing good in anything. Critic यानी आलोचक. A group of people. Crowd यानी भीड़. Break or fall apart into small fragment in the process of deterioration. Crumble यानी चूर होना. A dynamic campaign for political, social or religious change. Crusade यानी धर्म युद्ध. Having or forming a hard outer layer. Crusted यानी पपड़ीदार. A device for deciphering codes and ciphers. Cryptograph यानी कूटलेखन. The study of secret writing and coded language of words. Cryptography यानी गुप्त लेखन. A study of secret writing and coded language or word. Cryptography यानी गुप्त लेखन. A style of cooking food characteristic of a particular country or region. A style of cooking food characteristic of a particular country or region. Coisin यानी भोजन. Guilty of the crime. Culpable यानी अपराधिक. All the art beliefs and social institution etc characteristic of a race. Culture यानी संस्कृति. A person in charge of a museum. Curator यानी संग्रहालय का अध्यक्ष या फिर संग्रहालय अध्यक्ष. Signal under martial law for people to remain indoors. Curfew यानी निषेधाज्ञा. A strong desire to know or learn something. Curiosity यानी जिज्ञासा. The system of money used in particular country. Currency यानी मुद्रा. The express of a wish that misfortune or doom befall a person. कर्ज यानी कोसना. One who sneers at the aims and belief of his fellow man. Or a person who believes that only selfishness motivates human action. सैनिक यानी निंदक या मानव द्वेषी. Extreme fear of gods. Cynophobia यानी कुत्ते से असाधारण भय. Central of attraction. Cynosure यानी आकर्षण बिंदु. A secret of disgust way of writing. Chaper यानी गुप्त लिखावट. Dealing with cells. Cytology यानी कोशिका विज्ञान. A situation when no progress is possible. Deadlock यानी गतिरोध. A period of 10 year. Decade यानी दशक. Act of injury others reputation by any slanders
कम्युनिकेशन, डिफेमेशन, डिफेमेशन यानी मानहानि, टू इंजर वंस रिपुटेशन, डिफेम, डिफेम यानी बदनाम करना, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर, डिफेंड, डिफेंड यानी बचाव करना, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर, डिफाइंस, डिफाइंस यानी अवज्ञा, और शॉर्टेज ऑफ विटामिन्स मिनरल्स ईटीसी नीडेड फॉर गुड हेल्थ, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी यानी पोषक तत्वों की कमी। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 400 तक कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।